जय जगन्नाथ पिला मानी शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानकु ढेर सारा स्वागत। आज वीडियो रे आमे माने अष्टम श्रेणी इंग्राजी प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया कुचंती जोटा कि अष्टम श्रेणी बोर्ड परीक्षा निमंते बहुत हेल्पफुल रहइबो। दया करी हम चैनल शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर दियंतु एवं लाइक करंतु ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु ताकि वीडियोटी सर्वप्रथम आपनक पाखरे पहुंची परिबो एवं सांग मानक सहित शेयर करंतु। चलंतु आरंभ करबा आजिर प्रश्न। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1 रे रहिछि रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier far than these. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven over the tops of trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. ए पोएम टाकू प्रथम पढ़िबो तापरे देखि देखि से प्रश्न रु पोएम टाकू देखि कि प्रश्न रो गुडाकर उत्तर लिखिबा पई पड़िबो। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। शिप्स सेल ऑन द सीज, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। सी नंबर डैश बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई यार सटीक उत्तर रेनबो RAINBOW रेनबो। द बो रेनबो माने इंद्रधनु बो माने भी एठी इंद्रधनु। फिल इन द ब्लैंक्स। बोट्स एंड शिप्स आर कंपेयर्ड टू क्लाउड्स। Rivers and seas are compared to sky. Rainbow is compared to bridges. परवर्ती प्रश्न आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ आर क्लाउड्स कंपेयर्ड टू बोट्स? Clouds are sailing across the sky just like ships are sailing across the seas and boats are floats on the river. परवर्ती प्रश्न why is the rainbow compared to a road? Rainbow bridges a road to the heaven from the earth like a road, so rainbow is compared to a road. C number प्रश्न the rainbow is the prettiest of all. Who said this and why? The rainbow is the prettiest of all. The poet said this. Rainbows are pretty because they show many bright colors in the sky after rain. They look magical and make people happy. परवर्ती प्रश्नटी रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को पढ़ी कि परवर्ती प्रश्न गुड़िकर उत्तर देबा पई कुआ जाइछि। आर एयर पोल्यूशन occurs when harmful gases, smoke and chemicals mix with the air. एयर पोल्यूशन घटे केतेबेले ना जेतेबेले क्षतिकारक गैस स्मोक धुआं केमिकल मिक्स रासायनिक मिश्रण घटी थाए विथ द एयर वी ब्रीथ आमे से वायु को जेतेबेले श्वासक्रिया रे ग्रहण करू। द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन आर वायु प्रदूषण रो प्रारंभिक बा प्राथमिक उत्स गुड़िक होउची व्हीकल्स जानवाहन गुड़िक, फैक्ट्रीज कारखाना गुड़िक, बर्निंग ऑफ गार्बेज आवर्जना पोड़िले एंड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूएल्स एवं जीवाश्म ईंधन जालिले। एयर पोल्यूशन मेक्स द एयर डार्टी। वायु प्रदूषण वायु को दूषित करंती एंड अनसेफ एवं अस्वास्थ्यकर कर दियंती फॉर लिविंग बीइंग्स जीवंत प्राणी मानक पई। केवल मनुष्य नहंती जेते जीवंत प्राणी अछंती समस्तक पई यह क्षतिकारक। इट कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। यह श्वासक्रिया रे समस्या सृष्टि करि पारे। आस्थमा, हेडाक्स, मुंड व्यथा एंड इरिटेशन इन द आईज आखिरे ज्वलन बा जंत्रणा सृष्टि करि पारे। प्लांट्स आर आल्सो अफेक्टेड। उद्भिद गुडी को मध्य प्रभावित हुअंती कारण पोल्यूटेड एयर स्लोज देयर ग्रोथ। कारण प्रदूषित वायु सेमानंकर वृद्धि को कम कर दियंती
क्षीण कर दियंती धिमेई दियंती एंड डैमेजेस देयर लीव्स एवं तांकर पत्र गुडी को उद्भिदर पत्र गुडी को नष्ट कर दियंती। एयर पोल्यूशन कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज वायु प्रदूषण मध्य पाग परिवर्तन कारण हे पारे व्हेन which in turn causes extreme weather conditions जहा कि अत्यधिक पागर परिवर्तन आनी थाए टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को वायु प्रदूषण को कम करबा पई वी मस्ट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट माने सार्वजनिक जानवाहन जेमति कि बस ट्रेन एगुड़ा हमर कोन सार्वजनिक जानवाहन कारण एटा कोनोसी निर्दिष्ट जने व्यक्ति नुहे अनेक व्यक्ति अनेक लोक ताको व्यवहार करि परिबे ताको सेही भली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें व्यवहार करि परिबा। प्लांट मोर ट्रीज एवं अधिक गच्छ लगेबा वनीकरण करिबा एंड अवॉइड बर्निंग वेस्टेज एवं अलिया गुडी को पोड़ीबा विरत रहिबा अर्थात अलिया गुडी को पोड़ीबा ना जानि अलिया गुडी को न पोड़ी पुति देवाटा भल। एवरीवन मस्ट वर्क टुगेदर टू कीप द एयर क्लीन समस्त एकाठी मिसी काम करबा वायु प्रदूषण को रोकिबा एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट आ हम परिवेश को सुरक्षित रखिबा पई। रीड द फॉलोइंग sentences carefully write T for true सत्य बा ठीक पई टी लिखिबा एवं फॉल एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट मिथ्या उक्ति गुडी को पई फॉल्स माने एफ बा मिथ्या लिखिबा। ए रे बर्निंग गार्बेजेस इज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन ठीक अछि ना भूल अछि ठीक कथा कहिछि। टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एवरीवन मस्ट यूज पर्सनल व्हीकल व्यक्तिगत जानवाहन व्यवहार करिबा से कहउछि वायु प्रदूषण को कम करिया पई ना एटा भूल कथा हमें पब्लिक व्हीकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवहार करिबा तेणु एटा फॉल्स। एयर पोल्यूशन कैन डैमेजेस द लीव्स ऑफ प्लांट्स हां एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण उद्भिदर पत्र गुडी को नष्ट कर दियंती तेणु ट्रू ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हाट इज एयर पोल्यूशन। Air pollution occurs when harmful gases, smokes, and chemicals mix with the air we breathe. Mention one health problem caused by air pollution: breathing problems, asthma, headaches, and irritation in the eyes. What steps should we take to reduce air pollution? Air pollution को कम करबा पे हमें केउ सबु कम करबा पे हमें केउ सबु स्टेप पदक्षेप नबा टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन वी मस्ट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो गुडाक से अनुच्छेद थिला से गुडा को लिखिचे नुवा जिंस किछि लिखिबा नै अनुच्छेद को पढिबा सेइथरु खोजि कि उत्तर लिखिबा। प्लांट मोर ट्रीज एंड अवॉइड बर्निंग वेस्टेज द वेस्ट आवर्जना वेस्ट माने आवर्जना वेस्टेज माने भी सही आवर्जना। व्हाई इज एयर पोल्यूशन हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स? एयर पोल्यूशन मेक्स द एयर डर्टी and unsafe for living beings. परवर्ती प्रश्न बी नंबर हाउ डज एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज? एयर पोल्यूशन ता किपरि पानीपाग रे परिवर्तन आनी थाई? प्लांट्स आर अफेक्टेड because polluted air slows their growth and contribute to climate change. सी नंबर प्रश्न why is planting more trees important? Planting more trees is important to keep the air clean and protect our environment. परवर्ती प्रश्न टी मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। प्रोटेक्ट वी वियर हेलमेट्स आमे हेलमेट पिंधु टू प्रोटेक्ट आवर हेड्स हमर मुंड को सुरक्षित रखिबा में आमे हेलमेट पिंधु। सोर्स माने उत्स द सोर्स ऑफ द रिवर इज इन द माउंटेन्स नदी गुडी कर उत्स होची पर्वतमाला। affect rain can affect our travel plans वर्षाटा हमर भ्रमणर योजना को प्रभावित करि पारे। परवर्ती प्रश्न रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई कैन गेट away without any key and strip the leaves from the great oak tree. I can drive the storm clouds and shake the tall towers or steal through the garden and not wake the flowers. एई उपरोक्त गीतटी को देखी पढ़ी प्रश्नर उत्तर गुड़ाक देबा पई कहा जायछि। हु कैन गेट थ्रू ए गेटवे? द विंड कैन गेट थ्रू ए गेटवे। विंड कैन गेट थ्रू ए
gateway. Who is the narrator of the poem? The narrator is the wind. What can the wind strip? Wind can strip the leaves from the great oak tree. D number प्रश्न, name two destructive actions mentioned in the poem. दीटा ध्वंसात्मक क्रियाकलाप सूचना दियो जोटा कि मेंशन हेची कोठी ए पोएम रे जोटा पढिले आमे ऊपर. स्ट्रिप द लीव्स फ्रॉम द ग्रेट ओक ट्री. विशाल ओक ट्री रो पत्र गुडा को झाड़ी दिए. ड्राइव द स्ट्रॉम क्लाउड्स एंड शेक द टॉल टावर्स. E number प्रश्न टी, what can the wind shake? The wind can shake tall towers. पवन बड़ बड़ टावर गुडा को भी दोहलेई दिए. नेम टू जेंटल एक्शंस मेंशन्ड इन द पोएम. दीटा भद्र बा भल कार्यकलापर सूचना दियो जोटा कि कविता रे अछि. जेंटल एक्शंस मेंशन्ड इन द पोएम आर स्टील थ्रू द गार्डन, नॉट वेक द फ्लावर्स. परवर्ती प्रश्नटी रहिछि, हाउ द विंड इज बोथ स्ट्रॉन्ग एंड जेंटल. किपरि पवन उभय शक्तिशाली एवं नम्र बा धीर बा शांत. The wind is strong enough to rip leaves from trees and shake tall towers. Strong कहला बेले कोन करे ना गछरु पत्र गुडा को झाड़ी दिए एवं बड़ बड़ टावर गुडा को दोहलाई दिए. Yet it can also sleep quietly out. एमती भी मध्ये अच्छी पवन धीर भावरे शांत भावरे बही जाए थ्रू गार्डन्स बगीचा मध्ये देखि विदाउट वेकिंग फ्लावर्स. गछ गुडा को न हले कि न उठे कि न जागृत करे कि. दैट मिक्स ऑफ पावर एंड सॉफ्टनेस. एटा उभय पावर तार शक्ति पवनर शक्ति देखौछि एवं तार कोमलता सॉफ्टनेस को दर्शाउछि. मेक इट बोथ फियर्स एंड जेंटल. परवर्ती प्रश्नटी, व्हाई इज दिस विंड इज सो डिस्ट्रक्टिव. पवनटा काहेकि एमती अधिक ध्वंसात्मक ध्वंसकारी कौन करे कि. द विंड इज डिस्ट्रक्टिव बिकॉज इट मूव्स विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स व्हिच कैन ब्रेक ट्रीज. जोटा कि गछ गुडा को भांगी दिए, डैमेज हाउसेस घर गुडा को भांगी दिए, नष्ट कर दिए एंड क्रिएट स्टॉर्म्स एवं झड़ सृष्टि करे. एमती हेले खराब नै कि शक्तिशाली. परवर्ती प्रश्नटी, write and rhyming words for following words and make sentences using the rhyming words. Shake ro rhyming word cake, tower ro rhyming word power. Rhyming means समतान शब्द बा एका सुबुथबा शब्द जेमति shake cake, tower power. परवर्ती प्रश्न, can you be like the wind? How? Yes, I can be like the wind. पिले माने यार उत्तरटा लेखाइनी निजे लेखि दबो मु कहि दउची. Yes, I can be like the wind. I may use the power and softness both in my life. गोटे गोटे जगार हमकु हमर पावर देखेबा को पड़िबा. गोटे गोटे जगार हमकु सॉफ्टनेस हमर सॉफ्टनेस रहिबा उचित जोटा कि हमें पवन ठू सिखु. राइट टू सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड वाटर एंड गार्डन. I watered the garden every day. मु बगीचा रे प्रतिदिन पानी दिए. The garden needs water to grow. बगीचार गछ गुड़िक बढ़िबा पई जल आवश्यक करंती. ओ एठी पिले माने रहि जाई छि. एठी ए नंबर प्रश्नर उत्तरटी, कैन यू बी लाइक the wind. How? I can be like wind. It moves through gateway without a key, strips leaves from trees and shake tall towers. Yet it also sleep through gardens without waking the flowers. एठी दीटा कथा सुचौची. गोटे होउची पावर. केते केते को जगह हमको हमर पावर निश्चय देखैया पड़िबो. आउ कोन करिबा ना आउ गोटे होउची सॉफ्टनेस भी रहिबा उचित. जीवन सफल होगा पहले दीटा जिनस पावर एवं सॉफ्टनेस दीटा जांक दरकार. परवर्ती प्रश्न, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एटा जोटा द पुअर स्टोन कटर विषयटा रहिथिला अष्टम श्रेणी रो नॉन डिटेल टेक्स्ट रो सेइथु आछि. एटा अछि पिले माने देखि दबो. तमे तो पढिछ, हमें अधिक पढी पढी करले एठी भिडियोटी लंबा हेइ जिवो. तेणु मु उत्तरटी कहि दउछि. हु केम व्हेन कालू विश्ड टू बी रिच.
किए कहिला कालू जेतेबेले हु केम किए आसिला जेतेबेले कालू इच्छा करथिला धनी हेबा पई ए फेरी एन एंजल ए किंग ए क्लाउड किए आसिले ना एन एंजल जने देवदूत। परवर्ती प्रश्न व्हाट डिड कालू टर्न इनटू आफ्टर बिकमिंग ए किंग राजा हेला परे कालू कौन हे गला राजा हवा परे कौन हेला ना द सन सूर्य बनी गला। व्हाट प्रिवेंटेड द सन कालू फ्रॉम रीचिंग द अर्थ विंड रेन क्लाउड ना डार्कनेस सठिक उत्तर ए क्लाउड। पिले माने हमर एई परी जो नुआ पाठ्य पुस्तक आसीबो एई शिक्षा वर्षरू सबु प्रथम रु अष्टम पर्यंत बही बदलुची पिले माने सेति पई हमर एई शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल रे सबु विषयर क्लास आरंभ होई जिवो। दया करी हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं सांग मानक सहित शेयर कर दियंतु से माने मध्य आम यूट्यूब चैनल पाठ पढ़ी परिबे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु जो माने कर नाहंती। परवर्ती प्रश्न व्हाट वाज कालूस ऑक्यूपेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी आरंभ रे कालूर वृत्ति कोन थिला। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी कालूस ऑक्यूपेशन वाज कटिंग स्टोन्स काठ काटिबा जो पत्थर काटिबा थिला तार वृत्ति कटिंग स्टोन्स। व्हाट डिड कालू डू ऑल डे आफ्टर बिकमिंग रिच धनी हेबा परे दिन सारा कोन कला आफ्टर बिकमिंग रिच कालू एट एंड स्लेप्ट ऑल डे दिन सारा खाइला एवं सोइला। परवर्ती प्रश्नटी मनी इज एनफ लिखा है पिले माने प्रश्नटी भूल अछि मनी इज नॉट एनफ। प्रश्नटी मनी इज नॉट एनफ आई वांट टू बी ए किंग मु गोटे राजा हवाक चाहूची हु सेड किए कहिला ना कालू कहिची मनी इजंट एनफ आई वांट टू बी ए किंग कालू सेड दिस कालू ए कथा कहिला। परवर्ती प्रश्न व्हाई डिड द सन नॉट शाइन व्हाई डिड द सन नॉट शाइन ऑन द अर्थ कहीं की सूर्य पृथ्वी रे आउ चमकिले नहीं। Cloud covered the sun, it would not go away, so the sun could not shine on the earth anymore. परवर्ती प्रश्नटा why did कालू want to become a cloud कालू काहेकि गोटे क्लाउड होबाकू इच्छा कला कालू saw the cloud cover the sun cloud is stronger than the sun so कालू said that he wanted to be a king कालू देखिला क्लाउड बा बादल कौन करूची ना सूर्य को ढांकी के रखी दउची क्लाउड इज स्ट्रॉन्गर देन सन क्लाउड टा सूर्य द सन सूर्य ठारू शक्तिशाली अछि सो कालू सेड दैट तेनु कालू कहला ही वांटेड टू बी ए किंग से ओटे कोन हबो ना राजा हबो। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द following words enough I don't have enough money to buy a new phone around we walked around the lake and enjoyed the view। परवर्ती प्रश्न इफ यू वर कालू वुड यू बी सैटिस्फाइड आफ्टर बिकमिंग रिच व्हाई और व्हाई नॉट जदी हां तबे काहे की जदी नुहे काहे इफ आई वर कालू आई वुड नॉट बी फुली सैटिस्फाइड जस्ट बाय बीइंग रिच खाली धनी की संपूर्ण भाव रे कोन इन तांती ना संतुष्ट इन तांती बिकॉज़ मनी कांट बाय हैप्पीनेस टंका बा धन सुख किनी पारेनी और ट्रू पर्पज आई वुड स्टिल नीड लव मु कोन आवश्यक करतांती ना लव स्नेह बा प्रेम फ्रेंडशिप बंधुत्व एंड मीनिंग इन लाइफ जीवन अर्थ खोजी थांती। बी नंबर प्रश्न इफ यू वर ए सन जदी तुमे सूर्य होइथांत व्हाट वुड यू डू तुमे कोन करथांत इफ आई वर ए सन आई वुड राइज एवरी डे मु प्रत्येक दिन सकाळू कोन होइथांती उदय होइथांती जस्ट टू लाइट अप पीपल्स लाइव्स लोकमानकर जीवन रे आनंद उत्साह भरिबा पई एंड चैस अवे देयर डार्कनेस एवं सेमानक जीवन रो अंधकार को दूरीभूत कर देइथांती। आइडेंटिफाई टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट निम्नलिखित सेंटेंस रे टेंस टाको खोजिबा एवं ताको लिखिबा। सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क सी हैज कंप्लीट देखो हैज कंप्लीटेड अछि आई हैव इटेन ही हैज इटेन तेनु जदी हैज आउ वर्ब थर्ड फॉर्म लागि गला ताले एटा होची प्रेजेंट टेंस। दे विल बी ट्रैवलिंग टुमारो विल बी ट्रैवलिंग ये होची फ्यूचर
टाइम रो संदेश तेणु प्रथमटी प्रेजेंट टेंस द्वितीयटी फ्यूचर टाइम। परवर्ती प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। रीता वॉक्ड थ्रू ए गार्डन अर्ली इन द मॉर्निंग। She sat on a bench to read her book. Birds were flying above the trees. परवर्ती प्रश्न complete the sentences of column A by matching with the correct preposition mentioned in column B. The cat is hiding under the table. Under it achi under the table. She will return at 6 p.m. Distribute the sweets between two friends. ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ମିଠା ଗୁଡାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। Change into active. The homework was done by the student. The students did the homework. Active ହି ତାର କଣ କରିବା ନା ବଦଳେଇବା। active voice ରେ ଲେଖିବା। Identify whether the sentence is active or passive. active ରେ ଅଛି ନା passive ରେ ଅଛି ଦେଖାଅ। ନା the match will be played tomorrow. Passive voice. Read the sentences identifying the adjective and write any three of them in the blank space. पहले adjective कोउटा विशेषण कोउटा ना जिए noun को बा विशेष्य को विशेषित करे बा विशेष्य विषय noun विषय जे अधिक कुहे किए ना इतरु बाछिबा ए young girl. girl होउची noun केंतिया girl ना young girl तेनु young होउची गोटा adjective। तापरे कहूची देखिबा एठी she painted a bright flower. flower टा केमिति ना bright उज्जवल तेनु bright टा एठी होउची कोन adjective। new house house टा केमितिया ना new house रो अवस्था कहूची तेनु new टा एठी adjective। तापरे एपटे आसिले beautiful garden केंतिया garden ना beautiful garden तेनु एठी adjective होउची beautiful। Question number 11. Rewrite the sentence using correct punctuation mark. Rita said I will enjoy the competition tomorrow. Rita said pore comma inverted comma आरंभ होला ऊपरे I will join the competition tomorrow full stop एवं inverted comma शेष। Do you know the way to the station or should I ask someone else? Do you know the way to the station comma or should I ask someone else question mark। सरला पंक्चुएशन मार्क। राइट ए पैराग्राफ यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्द गुडी को नेई गोटे पैराग्राफ लिखिबा पई कह जाईची क्लासरूम प्लेग्राउंड लर्निंग फ्रेंड्स टीचर्स एक्टिविटीज एगुडा को नेई गोटे पैराग्राफ लिखिबा। एवरी डे एट स्कूल वी स्पेंड टाइम इन द क्लासरूम एंड ऑन the playground. We do lots of learning with our friends and teachers. Our teachers help us understand new things. We play games and join activities with friends. School is fun because of friends, teachers and activities. Question number 13. Complete the following paragraph using the words from bracket. Bracket ru word neki paragraph टाको fill up करिवा। Sports keep us healthy and active. We learn to work in a team and support each other. Regular practice helps us build strength. Every game has rules that players must follow. Whether we become a winner or not, we should play with honesty. परवर्ती प्रश्न write a paragraph about your teacher in 5 sentences. पांचटा सेंटेंस रे तुम टीचर विषय रे लिखिया पई कहछि। माय टीचर इज काइंड एंड ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स। मो शिक्षक जने दयावान व्यक्ति एवं सब बेले सहाय्य करंती नुवा नुवा जिंस शिखिबारे। से एक्सप्लेन्स लेसन से हमकु हमर पाठ्य विषय गुडा को वर्णना करंती इन सिंपल वे एवं सहज उपाय रे दैट मेक्स अस लर्निंग इजी एंड फन। हमर शिक्षण को सेटा सहज एवं कौतुकिया करि दे। केयर्स अबाउट एवरी स्टूडेंट से प्रत्येक स्टूडेंट को कौन करंती ना जत्न नियंती एंड मेक्स श्योर एवं निश्चित करंती नो वन फील्स लेफ्ट आउट केही जणे जेमते अबुझा न रुहंती। हर पेशेंस एंड एनकरेजमेंट तांकर धैर्य एवं तांकर उत्साह तांकर प्रेरणा गिव अस कॉन्फिडेंस हमकु
कॉन्फिडेंस जोगाए टू ट्राई आवर बेस्ट आमे भलो करिया पई आई फील लकी टू हैव मु भाग्यवान मन करे टू हैव ए टीचर एभली जने शिक्षक पई हु सपोर्ट्स अस बोथ इन स्टडीज एंड इन लाइफ जे हमकु हमर उभय पाठ पढ़ा एवं जीवन रे साहाय्य करंती समर्थन जणांती। परवर्ती प्रश्नटी 15 नंबर कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर टू योर फ्रेंड ऑन योर बर्थडे सेलिब्रेशन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स खाली गोटे छांचटे दे दिया है आउ किछिटा शून्य स्थान रही सेटा पूरण करबा जेमति कि ऊपर एठी जो शून्य स्थान देछि सेठी गोटे प्लेस रो ना लिखिले जेमति कि हमें खोर्धा लिखिचे तमे माने तम मानकर सांग जोठी अछि सेठी लिखि परिबो तबे डेट देछि 6/12/2025 सेटा आगरु दिया है कि अछि। डियर शिवानी एबी लिखा है माय बर्थडे इज ऑन द 20th ऑफ दिस मंथ एई मासर 20 तारिख रे मोरो जन्मदिन अछि माय फैमिली इज सेलिब्रेटिंग द ओकेजन मोरो बंधु माने उत्सव पालन करूचंती जन्म उत्सव पालन करूचंती माय पेरेंट्स आर गिविंग ए पार्टी मोरो पितामाता पार्टी अर्थात गोटे भोजर आयोजन करचंती प्लीज जॉइन अस आम सहित जोग दियंतु विथ बेस्ट विशेस फ्रॉम एठी तुमरो नाटा छांच देई देई छी आमे एठी लिखि परछि जहा गोटे ना लिखि देबे जेमति कि मु नलिनी लिखिछि के पद्मा लिखि परिबो विभिन्न निज निजर नाटा लिखिबे जे पत्रटा लिखुछि। परवर्ती प्रश्न रे 16 नंबर राइट एन एप्लिकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट 3 days लीव 3 दिन छुट्टी मंजूर निमंते प्रधान शिक्षकक निकटकू दरखास्त लेखिबा पई एठी कुहा जाईछि तो चालो लिखिबा पिले माने पिला माने एठी रहिला हमर एप्लिकेशन टी एमती लिखा जाय टू लिखि देबो टू परे कमा दबनी टू द हेडमास्टर आमे जेतु प्रधान शिक्षकक निकटकू लेखुचे लेखिबा टू द हेडमास्टर एठी मु गोटे स्कूल ना नेइछि तमे माने सेमती निज निज स्कूल ना लिखि निज स्कूल ना लिखिबो मु नेइछि गवर्नमेंट एमई गोपालपुर सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर 3 days लीव 3 दिन छुट्टी मंजूर निमंते दरखास्त एठी तापर पुनी कोन लिखिबा ना रेस्पेक्टेड सर सम्मानीय शिक्षक बा महाशय I respectfully request you to grant me 3 days leave from 26 to 2026 to 28 February 2026 ए मेडिकल फॉर ए मेडिकल रीजन को कारण भाई ता स्वास्थ्यगत कारण अछि असुविधा अछि सेहित पे आई विल एंश्योर टू कंप्लीट ऑल माय पेंडिंग वर्क मु निश्चित करूची मोर समस्त बाकी पड़िथिबा काम को शेष करिबा एंड कैच अप ऑन लेसन्स एवं पाठ गुडा को पढिबे आफ्टर आई रिटर्न मु फेरिबा परे काइंडली कंसीडर माय एप्लिकेशन दया करी मोरो दरखास्त को ग्रहण करंतु ग्रांट मी मोर छुट्टी मंजूर करंतु एंड ग्रांट मी लीव फॉर दिस डेज उपरोक्त दिन गुडी को छुट्टी मंजूर करंतु योर्स ओबीडिएंटली कोन ना तम ना तम क्लास तम सेक्शन एठी बिले माने स्कूल नेम आमे जेतु गवर्नमेंट एमई गोपालपुर नेइचे से एठी लिखि दबा गवर्नमेंट एमई गोपालपुर तमे माने निज निज स्कूल ना लिखिबो ता सहित जेबे एई एप्लिकेशन ता दउचो सेबे कार डेट लिखिबो। पिले माने 17 नंबर प्रश्नटी देखि दियो कंप्लीट द नोटिस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड्स ए विज्ञापनटा को कंप्लीट करो संपूर्ण करो एप्रोप्रिएट वर्ड ने कि बोल भलो होई छी छांचटा देई दिया है छी तमे खाली भर्ती करिवार अछि एवं ब्रैकेट रे से देई देई छी कोन लिखिबा हमें नोटिस एठी नोटिस नंबर कोटा 69 गोटे अछि सेटा होची नोटिस डेट डेटा आगरु अछि ताबरे डैश आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड को मानन को सूचना देउची ना एठी ऑप्शन अछि स्टूडेंट्स are hereby informed that school will remain closed for summer vacation from 1st May 15th June 2025 to कोटू एटा गोटे डेट अछि सेटा को लिखिबा 16th June 2025 students are advised to complete their daily holiday dash holiday homework एटी रहिची हॉलिडे होमवर्क एंड स्टे सेफ ड्यूरिंग द वेकेशन तो पिला माने एठी हमर अष्टम श्रेणी प्रैक्टिस क्वेश्चन समस्त प्रश्न आमे प्रैक्टिस कर देले तमे माने प्रैक्टिस करिनियो निश्चिंत बोर्ड परीक्षा पई एटा इंपोर्टेंट रहिबो आउ ता सहित शीघ्र शीघ्र हम शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दियो सांग मानक सहित शेयर कर दियो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट रे जणाओ जे हमर प्रैक्टिस क्वेश्चन टी केमती लागिला
आउ केमती हेल्पफुल रहिला आमे आउ परवर्ती समय रे नुआ बही जो आसी नुआ सिलेबस आसी बही संपूर्ण बदली जाईची पिला माने प्रथम ରୁ अष्टम श्रेणी पर्यंत तार क्लास भी आनिबा कमेंट माध्यम रे क्लास आनिबा ना नाही यस कहि कि जणै दियो धन्यवाद।